Hi guys, welcome back to my YouTube channel, or welcome if you're new here. I'm Harshita and today's video is going to be an update on my skin. So it's been quite a while since I last posted. It was like 4 months ago and a lot has happened since then. My skin has gone through a lot since September last year and I've been really inactive everywhere. Even on Instagram, I've been posting faceless content if you have noticed. So yes, this video is going to be an update on what happened and I'm just going to give you a quick rundown on what my skin has been through since last year because 2024 was not a good year for my skin. Like Jan से ही बहुत ज़्यादा problems हो रहे थे skin में, but it was still manageable till what happened in September. So let me start from January last year. January के end तक मेरी skin was amazing. Like this was my skin till Jan, and then Feb में I took a trip to Ahmedabad. If you have watched the vlog, you might know. So मैं first week of Feb Ahmedabad में थी and then the skin was doing very good उधर. But जैसे ही मैं अहमदाबाद से आई, I started noticing a lot of acne around my cheek area, like near my hairline. थोड़ा ज़्यादा था वो normal से because मुझे usually acne होता है तो like एक दो होता है यहाँ वहाँ and it just heals on its own like in 2-3 days. But this was different. इसको एक हफ्ता लग गया था heal होने में. But I did not really care about it. मुझे लगा ठीक है normal है and all. बहुत ज़्यादा scars and all भी हो गए थे उस acne से. But it healed with regular skincare and all of that. Normal हो गया था वो. And then around March, April, May, my skin was amazing. It was doing so good. एक भी मुझे acne नहीं हो रहा था. Everything was going so good with my skin. Like I was shooting regularly. I was going for so many events. I still remember March में हम लोगों ने इतनी गर्मी में Marine Lines पे 3 से 4 घंटे शूट किया था for Wendy's. And still my skin was so good. Like कुछ problem नहीं था. Then May comes in and बहुत ज़्यादा heat बढ़ गया था मुंबई में. So whenever I used to go out, I used to feel कि बहुत ज़्यादा गर्मी and my skin used to get very oily and very heavy with the sunscreen and everything. May में थोड़ा बहुत मुझे दिखने लग गए थे acne यहाँ वहाँ because of the heat and I was going out and I was shooting a lot. Almost every other day मैं makeup कर रही थी. वो ज़्यादा हो गया था थोड़ा, but it was still okay. But then May गया, June, July and that acne started increasing. Textures आ गए थे बहुत सारे और cheeks पे भी यहाँ वहाँ बहुत आ गए थे, lips के ऊपर. मतलब ये वाली जगह पे मुझे कभी acne होता नहीं है. And then it was really surprising for me कि ये अचानक क्यों हो रहा है because I did not change my skincare. I wasn't doing anything different with my skin. I wasn't trying a lot of products. जो भी मैं यूज करूँ वही यूज कर रही थी. But still ये हुआ. So I was a little worried obviously. तो मैं थोड़ा ध्यान देने लग गई स्किन पे. मैंने मेकअप करना बंद कर दिया. Only when it was absolutely necessary या मुझे शूट करना होता था तभी ही मैं मेकअप करती थी. मतलब literally every 2-3 days मैं मेकअप कर रही थी. I stopped that and literally 2 week में एक बार मेकअप कर रही हूँ या 2 बार मेकअप कर रही हूँ. And I used to shoot a lot of content in that 2 days so that I don't have to frequently do my makeup. So वो सब भी मैंने किया. I started taking care of my skin. I started watching what I was eating. मैं वैसे तो मतलब मैं इतना बाहर का खाती हूँ but ऐसे मेरा sweet and all intake ज़्यादा नहीं है. I don't know, मुझे तभी पता नहीं चल रहा था क्या reason हो सकता है. So I was taking care of everything थोड़ा जितना मुझसे हो रहा था because obviously इतना बड़ा change करना diet and all में it's not possible. और मेरे लिए तो नहीं है. I don't know about others. I decided to show to a dermatologist and I had reached out to a brand for collaboration. Around that time they replied to me also. मैंने सोचा कि इनके पास जाके आती हूँ. Let's see if I can figure out my acne situation with them. Had a word with the doctor. I told her that this acne situation is very sudden for me and मुझे कभी ऐसा acne हुआ नहीं है. So we had a word about my periods and hormonal changes and all of that. And my periods have always been regular. I told her that acne is my main concern right now. मुझे scars भी बहुत हो गए थे because वो May June से जो acne start हुए थे ना, that was like acne हो रहा है, फिर उसके scars छूट रहे हैं, फिर और acne हो रहा है, उसके scars छूट रहे हैं. So at that point when I went to that doctor, मेरा पूरा face में scars and acne दोनों हो गए थे. But then मेरा main concern तभी acne था because जब तक मैं acne को sort नहीं करूँगी scars तो आते ही रहेंगे. Once my acne clears, I can obviously focus on scars. But she told me that she could see a lot of scars on my face, so it would be much better to treat the scars. And मैं तो इतनी dumb हूँ कि मैंने तभी एक second नहीं सोचा. She suggested I go with laser treatment, and I think so आप लोगों ने वो video देखा होगा. It's on my shorts. Within like 2-3 sessions, we might be able to like lighten the scars a lot. Honestly, मेरे लिए scars बहुत irritating था. मेरे घर पे भी मैं complain करती रहती थी full time. यार इतने scars क्यों, इतना सारा makeup करना पड़ता है इसको छुपाने के लिए, ये वो. I can't even go out without feeling awkward. तो when she told me we can treat the scars, मेरे mind में first thing है वो, what if मेरे scars clear हो जाएंगे. I'll have to put less makeup and it would be a much better life without scars and blah blah blah. And I was so dumb. Please, if you are like me, don't be like me.
मतलब अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो, प्लीज टेक योर टाइम व्हेन इट कम्स टू योर फेस, व्हेन इट कम्स टू योर स्किन, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, डजंट मैटर, व्हेन इट कम्स टू योर स्किन, please take your good time, at least a day or two, to finalize the decision. I was so dumb to say yes right then and there because मैंने ये सोचा नहीं मुझे acne हो रहा है, how am I supposed to go with laser. I asked her, मैंने अपने सारे questions पूछ लिए थे, मतलब ये acne को तो बढ़ाएगा नहीं ना, और is it going to harm my skin even more because my skin is already breaking out regularly, frequently, जो पहले कभी नहीं होता था, like it won't trigger it even more, right? And मैंने अपने सारे questions पूछ लिए थे and she assured me that ऐसा कुछ नहीं होगा, the laser will only be on the scars वाला area where you don't have active acne, बाकी जगह पे लेजर नहीं गिरेगा, so it won't affect, it will only lighten the scars over time. मैंने सोचा ठीक है कर ले तो, and there मैंने वही दिन पे एक सेशन ले लिया, which was my biggest mistake. अगर मैं घर आई होती, मैंने थोड़ा टाइम लिया होता, researched a little bit about getting laser for scars and all of that, तो maybe मेरा माइंड चेंज हो गया होता या नहीं होता, I don't know, but that was my mistake. The first session was really nice, it was really nice. मेरे जो बड़े बड़े scars थे वो literally पील होके थोड़े लाइट हो गए थे after 7 days. मेरा acne breakouts भी बड़े नहीं थे, जो थे वही थे, and it was healing, आ रहे जा रहे वही चालू था, acne का कोई ऐसा drastic वो नहीं हुआ था. But after a month or I think 25 days, I go for my second session, and that's when everything went wrong, is what I feel. अभी मुझे नहीं पता यही reason है या नहीं जो आगे होने वाला है उसका, लेकिन this has to be one of the reasons because I could feel it did not go as planned. So basically what happened is, the first session that we did, it was only on the areas where I had like proper scars, बड़े से black scars हो गए थे. When your scars turn black, it means like it's the old scar, जिधर acne बहुत पहले आके चला गया है, but आपका scars जब red होता है, that means it's a fresh scar, अभी heal हुआ है यहाँ से acne, that is why the scar is red. So basically मेरी skin है ना बहुत पतली है. Okay, so if you see me in person, आपको literally veins दिखेंगे मेरे cheeks पे, red and green veins. मेरी skin इतनी पतली, मैं खुद confused हो जाती हूँ when I'm doing my makeup. I'm like भाई ये scar है कि क्या है? But it's just my skin. It's really red. बहुत सारे red dots and all है, which are not scars by the way. It's just my skin. The doctor told me जब उन्होंने analyze किया second session के टाइम पे skin, your scars are looking very dispersed. Basically आपके forehead पे पूरे फैल गए, ऐसा नहीं कि एक दो ऐसे हो कि मैं target कर सकूँ. It's very dispersed. So what we can do is we can go all in with the laser, so it will target all the scars at once. And again I said yes. I told her okay, if you feel we can do that, let's do it. And हमने पूरे forehead पे धड़ पूरे cheeks, पूरा chin, पूरा face हमने laser कर लिया. And that was not a good decision because जब मेरा treatment हुआ, I could feel my skin was much red than how it was during the first session. बहुत ज़्यादा inflamed दिख रहा था, but she told me it will settle down, which it does. Obviously मैं घर आई उतने में तो वो settle भी हो चुका था, but I did not feel right about it. मुझे तभी भी ऐसा लग रहा था घर पे आके that no, this is not looking good. But मैंने फिर भी wait किया, जैसे मैंने first session में किया था वैसे ही मैंने continue किया skin care and everything. The cream that she suggested, I applied it on the scars and scabs का wait किया गिरने का. But 7 days के अंदर ही मेरा forehead पे acne आ गया था बहुत सारा, cheeks पे भी बहुत नॉर्मल से ज्यादा एक्ने आ गए थे. मैं सब फोटोज यहाँ पे डाल रही हूँ तो आपको समझेगा कि कैसे ग्रेजुअली सब हुआ. सो ये होने लग गया एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब तो ये हाथ से निकलते जा रहा है सिचुएशन, ये और ज्यादा हो गया. आई वाज रियली मैड बिकॉज मुझे मेकअप करने का मन नहीं हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था मेकअप करूंगी तो कल को मुझे और नए एक्ने आ जाएंगे या फिर इट इज जस्ट गोइंग टू डिस्टर्ब माई स्किन. आई वाज नॉट फीलिंग माई सेल्फ. मुझे शूट करने का मन नहीं हो रहा था, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था, बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था, कोई इवेंट्स आ रहे थे ब्रांड्स के तो वो लेने का मन नहीं हो रहा था. सो आई डिसाइडेड टू गो टू माई फैमिली doctor who knows me since like 4-5 years and she knows my skin. उनको पता है मेरी स्किन कैसी थी, कितनी क्लियर थी. I told her this has happened. I got laser done and मैंने उनको सब बता दिया जैन से जो मेरे साथ हो रहा था, जैसे अप एंड डाउन चल रहे थे स्किन में. She suggested a few acne medication. She put me on antibiotics for a month and she gave me this Lindac gel to apply in the night जहाँ acne है वहाँ पे पूरे face पे. She even changed my face wash and my moisturizer. She put me on Cetaphil face wash and Sebamed का acne control moisturizer. So these were the only products I was using. ये है अगस्त की बात. Yes, August 1st को I went to her and since then 30 days का उन्होंने मुझे बोला था ये कंटिन्यू करो आप 30 days and then come back to me. We will check your skin कि कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं. पूरा अगस्त महीना मैंने religiously ये स्किन केयर रूटीन फॉलो किया उनका. She strictly told me not to put makeup. So I did that. मैंने एक महीना मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया. बीच में किया obviously जब जरूरत पड़ी थी, मतलब when I could not ignore because इतनी स्किन प्रॉब्लमेटिक नहीं थी तभी.
मैं मेकअप कर सकती थी, मतलब नॉर्मल एक्ने था, ऐसा नहीं था कि मैं मेकअप कर ही नहीं सकती या टच नहीं कर सकती. देन अराउंड 28th August 29th August आई वाज प्लानिंग टू गो टू हर. सिंस 1 month का था, सो आई डिसाइडेड टू गो टू हर. एंड ये है मेरा picture before going to her, and this is how my skin started looking after the treatment. Like जब मैंने वो 1 महीने का पूरा कोर्स किया उनका with antibiotics and all the new like face wash and वो सब, my acne cleared completely. मेरा forehead पूरा clean हो गया था. There were only scars left. मेरा पूरा cheeks clear हो गया था. There was just 1 or 2 bumps here and there, but other than that my acne, मतलब मेरे जो active acne थे, that completely got cleared. So I went to the doctor. I told her I was really happy. I told her कि this worked, this really worked, and my skin is like अभी acne नहीं है मुझे इतना active वाला. So she told me now you can work on your scars. I'm suggesting you a scar का cream and you can use that. Laser treatment के बाद जो हुआ था उसके बाद this was the results that made me truly happy. You know, back to normal लग रही थी skin and I could feel कि अब मैं finally I can start using products for my scars and everything. मेरे घर पे जो था products which I wanted to use since a long time, but I was not using it because of my skin का situation. I started using that. So I started using a ceramide moisturizer Foxtail का, and then I started using snail mucin for my scars and hyperpigmentation and जो भी है, and it was really working. मैं 1 हफ्ता ही यूज कर पाई because उसके बाद बहुत सारी चीजें और होने वाली आगे, but 1-2 हफ्ता मैंने कंटिन्यूसली ये वाला रूटीन ट्राई किया and my skin was really turning nice. मतलब दिख रहा था मुझे फर्क. I could see मेरी स्किन ब्राइट हो रही थी. It was looking healthy at least, and this was around I think September का 2 weeks तक, September के 2nd week तक ऐसे था. Then 22nd September is where everything goes down the hill. I don't know how, why, क्या रीजन है, लेजर रीजन है या I don't know. So 22nd September को I went out with my siblings to watch JK's movie I Am Still, and उस दिन मुझे ब्रांड का भी एक शूट करना था. So मैंने सोचा कि मैं मूवी के बाद वहीं पे बाहर मॉल में I'll just shoot for the brand and we'll come back home. Then around 1 or 2 p.m. we started shooting and मैंने मतलब कुछ around 1.5 hour आराम से शूट किया होगा in scorching heat. Extreme sun exposure हुआ मेरा उस दिन. Next day I wake up to this textured feeling on my skin. मतलब अचानक से when I washed my face I was feeling very rough. Texture feel होने लग गया था मुझे मेरे पूरे स्किन पे. बहुत ज्यादा roughness feel हो रही थी. But मैंने इग्नोर किया उसको. मैंने सोचा मैं एक्सफोलिएट कर लूंगी मे बी थोड़े दिन बाद and it will go back to normal. But that did not happen. उसके थोड़े दिन बाद I started seeing these bumps everywhere, like not acne but bumps. Texture तो था ही, 2-3 दिन बाद भी texture was there, but bumps भी होने लग गए and I could feel a lot of bumps on my forehead, on my cheeks, and I was worried कि ये क्या हो रहा है. But then I had to shoot for a brand तो मैंने वो भी किया. The bumps, the textures, it just started increasing. पूरा forehead bumps से भर गया था. Literally जो मेरा वो अगस्त में clear हो गया था, पूरे अगस्त महीने में इतनी मेहनत करके वो पूरे वापस आ गए. And it was worse this time. पूरा forehead, like I could not feel my skin. इतना ज्यादा bumps हो गए थे. It was only on forehead. यहाँ पे इतना नहीं था cheeks पे. एक और मेरा dumb decision आने वाला है अभी. Forehead पे ही ज्यादा हो रहा था bumps. मतलब मेरे cheeks पे भी हो रहा था, but 3-4 यहाँ वहाँ वैसे. But forehead was completely filled. तो मैंने थोड़ा Google and all किया. I started seeing fungal acne के symptoms and मुझे ऐसा लगा ये fungal acne ही हो रहा है मुझे. Because it was itchy, it was dispersed everywhere. That's how fungal acne is. It's of same size and बहुत सारे छोटे-छोटे bumps हर जगह हो जाते हैं, especially on your forehead. So मुझे लगा ये fungal acne ही है. I just go ahead and I read what to do for fungal acne and all of that. And obviously when you go and when you research about fungal acne, आपको एक ही चीज दिखती है, apply ketoconazole या zinc वाले anti dandruff shampoo and you'd be good to go. तो मैंने भी यही किया. I ordered this Nizoral जो बहुत ही famous anti dandruff shampoo है. मैंने वो ऑर्डर किया because उसमें ketoconazole जो ingredient होता है वो which targets the fungal acne, it was there. So मैंने वो ऑर्डर किया and I started using it every night to wash my face. I stopped face wash in the night. मैं सिर्फ सुबह face wash कर रही थी and रात को मैं वो shampoo use कर रही थी for 10 minutes. I was keeping it on. मैं ऐसे mask के जैसे मैंने लगा रही थी and I was keeping it for 10 minutes and I was washing it off. और ये मैंने 10 दिन तक किया and then my skin just went from normal bumps and normal थोड़े बहुत active acne से severe acne. Like within weeks I could see my skin going worse. And
आई डोंट नो अब ये उस दिन धूप की वजह से हुआ या मेरे ये स्टूपिड डिसीजन की वजह से हुआ जो मैंने शैम्पू अपने फेस पे थोप थोप के लगाया, या फिर आई डोंट नो क्या, बट आई एम श्योर बहुत सारी चीजें एक साथ हुई. माई स्किन बैरियर वॉज डिस्ट्रप्टेड बाय देन. इट वॉज डैमेज्ड so much that I was in pain. It was very itchy. I could not touch my skin. I could not wash my face. मतलब रोज सुबह मुझे खुद को ऐसे धक्के मार के बाथरूम लेके जाना पड़ता था फेस वॉश करने के लिए because it was so painful for me to wash my face. Like आप normally face wash करते हो so you know you go in the circular motion to you know make sure your face is clean. I could not do any of that. It was so painful and ये bumps धीरे धीरे gradually बढ़ते ही जा रहे थे. मुझे ऐसा लगा कम होएगा and that was also one of my mistakes. मैं डर्मैट के पास पहले नहीं गई. आई थॉट ठीक हो जाएगा एंड आई टुक माई टाइम. जब फाइनली मुझे ऐसा लगा कि अब ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है, लाइक मैं नॉर्मल चीजें नहीं कर पा रही हूँ, मैं हंस नहीं पा रही थी बिकॉज मैं जब हंसती थी मेरा स्किन इतना स्ट्रेच होता था कि वो एक्ने में से ब्लड पस सब निकलने लगता था एंड इट वॉज वेरी स्कैरी टू इवन लुक इन द मिरर. मतलब आई कुड नॉट टेक इट एनीमोर. सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं टाइम निकाल के जाती हूँ डर्मैट के पास एंड लेट्स सी व्हाट दिस थिंग इज. क्यों हुआ ये क्या है. आई वेंट आई गॉट यू नो चेक्ड एंड एवरीथिंग एंड शी जस्ट अगेन उन्होंने मेरा पीरियड्स का सब चेक किया टू सी इफ इट इज हार्मोनल एक्ने और नॉट. शी यू नो चेक माई डैंड्रफ सिचुएशन एंड आई हैव डैंड्रफ अ लॉट ऑफ इट. मेरा स्कैल्प भी बहुत ऑयली है बिकॉज ऑफ डैंड्रफ. सो वो सब उन्होंने चेक किया एंड देन शी टोल्ड मी दैट दिस इज बैक्टीरियल एक्ने एंड बैक्टीरियल एक्ने ऐसे ही होता है, बहुत फटाक से हो जाता है एंड बहुत जल्दी बढ़ जाता है. आई आस्क्ड हर लाइक व्हाट इज बैक्टीरियल एक्ने एंड शी टोल्ड मी दैट हेयर फॉलिकल्स मेरे डैमेज मतलब बैक्टीरिया से भर गए, इट्स फिल्ड विद बैक्टीरिया एंड I was so annoyed and I told her everything कि मैंने laser and all कराया है and she even asked me if I had you know shaved my face before the laser treatment and no I had not. मुझे तभी realize हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा और तब मुझे याद आया oh my god मैंने लास्ट मेरा फेस शेव किया था 2024 के फेब में, आई थिंक 1st या 2nd फेब को व्हेन आई वाज अबाउट टू गो फॉर माय ट्रिप टू अहमदाबाद. एंड उसके पहले मैंने वीडियो में भी डाला है पूरा जो मेरा नॉर्मल शेविंग रूटीन है वो. तब मुझे रियलाइज हुआ दैट वाज द लास्ट टाइम आई शेव्ड इन 2024 एंड जून जुलाई में आई गॉट माय लेजर ट्रीटमेंट डन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैंने इतने टाइम से मेरा फेस शेव नहीं किया था एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड इट देयर एंड मैंने ये सोचा कि मैंने पूछा भी नहीं उनको एंड मतलब डॉक्टर ने भी मुझे बताया नहीं कि शेव करना पड़ता है कि नहीं एंड माय डर्मैट टोल्ड मी कि वैसे नेसेसरी नहीं होता बट इट इज ऑब्वियसली important that you shave your face like a few days or a week before you go for your laser treatment so that आपका लेजर है जो वो स्किन पे जाए अच्छे से and it does its job what it's supposed to do. Basically अगर मैं scars को treat कर रही हूँ so it should you know penetrate in the skin and it should be able to remove the dead skin जो ऊपर से है and scars को निकाले, not to damage any hair follicle or anything because it is also risky if you have hair on your face or anywhere you're getting laser. Even when you go for hair laser removal आपको shave करना पड़ता है before the session. तब मेरे माइंड में ओ माय गॉड नहीं मैंने सोचा भी नहीं था एंड डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया. ऑब्वियसली यू विल नॉट नो एवरीथिंग. समटाइम्स इट हैपेंस व्हेन यू डिपेंड ऑन द डॉक्टर कंप्लीटली एंड देन वो जो बोलते हैं आपको वो सही लगता है एंड यू जस्ट गो विद इट. बट वो हो गया. फिर आई टोल्ड हर इज दिस बिकॉज ऑफ दैट. शी टोल्ड मी इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. सिंस दिस इज नॉट हार्मोनल एक्ने वी कैन नॉट यू नो पॉइंट ऑन सर्टेन थिंग्स कि वो इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हो रहा है या यू नो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है. डेफिनेटली शी थॉट देयर वाज हार्मोनल चेंजेस एज वेल. सो शी पुट मी ऑन आइसोट्रेटिनोइन, शी पुट मी ऑन antibiotics जो मुझे मेरी फैमिली डॉक्टर ने भी दिया था as is the same one. She gave me benzoyl peroxide to apply every night. She changed my face wash. She changed my moisturizer and सब चीजें बंद हो गई like any extra products. I was just using one moisturizer. उसमें भी SPF था so I did not have to use any other brand's sunscreen also because at that point my skin was completely damaged and we did not need any product that could you know cause more harm or cause more acne on the skin. ये सब मेरा रूटीन मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. मैं उतना बोल रही हूँ. So September में this started and I went to her November I think so. November first week which was my fault. मैंने इतना टाइम लिया क्योंकि मेरा जो acne जो था वो gradually increase हुआ. So मुझे ऐसा लग रहा था कभी कभी आपकी स्किन यू नो अलग अलग दिखती है. Some day looks very bad and the next morning you wake up and it looks better than yesterday and you feel like oh it's working, it's healing. सो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था. दैट इज व्हाई टुक सो लॉन्ग टू गो टू अ डर्मैट. सेकेंडली मैंने कभी डर्मैट को बताया नहीं है प्रॉपर वाले. इफ आई हैड एनी इश्यूज आई वुड गो टू माई फैमिली डॉक्टर और
या फिर मेरा खुद सॉल्व हो जाता था, वैसे ही था। मैं कभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कभी गई नहीं थी, सो आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर डर्मेट टू शो टू कि जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। तो मुझे कोई डर्मेट मिल भी नहीं रहा था अच्छा। दिस आई फाउंड आफ्टर रिसर्चिंग एंड ऑल, एंड उनके रिव्यूज अच्छे थे, सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो हियर। एंड फाइनली मैंने नवंबर में अपना रूटीन स्टार्ट किया, डर्मेट प्रिस्क्राइब, एंड विद इन अ मंथ ऑब्वियसली मेरी स्किन पर्ज हुई बिकॉज ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड एंड आइसोट्रेटिनोइन, दैट इज व्हाट इट डज। सो इट स्टार्टेड पर्जिंग अ लॉट। लाइक मैं जब डर्मेट के पास गई थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट कंसल्टेशन ओनली, शी टोल्ड मी दैट अगर मुझे मेडिकेशन एंड यू नो ये सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू अगर एक्ने को हील करना है, सो इट विल टेक मिनिमम ऑफ 4 to 6 months के बीच में, एंड आई नीड टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस, आई नीड टू स्टॉप मेकअप, आई नीड टू स्टॉप एवरीथिंग, ऑल द कॉस्मेटिक्स दैट आई यूज, एंड वो सब मुझे बंद करना पड़ेगा, एंड आई नीड टू डू इट फॉर लाइक अ गुड 3 to 4 months, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं 3-4 महीने बिना काम लिए, बिना कुछ काम किए, बिना किसी ब्रांड के साथ काम किए, कोई इवेंट्स अटेंड किए, आई कैन नॉट डू दैट। आई इवन स्टॉप्ड गिविंग ऑडिशंस, मतलब मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इवन दैट नीड्स मी टू पुट मेकअप एंड गो आउटसाइड इफ द ऑडिशन इज यू नो मुझे बाहर जाके देना है तो। सो बहुत सारी चीजें थी इन माई माइंड, बट मैंने क्या सोचा 1 month देख लेती हूँ, व्हाट इफ बाय गॉड्स ग्रेस मेरा स्किन ठीक हो जाए 1 month में, या एटलीस्ट इतना हो जाए कि मैं नॉर्मली मेकअप कर सकूं व्हाइल आई यू नो टेक केयर ऑफ माय स्किन। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 month में इट पर्ज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन एंड स्टफ, एंड अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आई इवन टोल्ड माय डर्मेट मैं फेस वॉश नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई कांट ले माय चीक्स ऑन द पिलो। आई यूज्ड टू कीप माय हैंड हियर सो दैट माय चीक्स आर ऑन हाइट एंड आई डोंट टच इट एनीवे, बिकॉज इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था दैट थोड़ा भी टच होता था तो एक्ने के स्कैब्स निकल आते थे, और इट यूज्ड टू पॉप, और you know blood pass and वो सब निकलने लगता था, and it was very difficult, it was itchy, it was painful, I could not eat properly। मैं खाना भी ऐसे इतना सा मुंह खोल के खाती थी, because ज्यादा खोलती थी तो मेरी स्किन स्ट्रेच होती थी, यहाँ तक एक्ने हो गया था। My skin became so tight that it was controlled by my acne at this point, I could not take it anymore। so मैंने घर पे मतलब decide किया, I talked to my sister, talked to my mother, and I asked them if I should get chemical peel, because I don't see any other way around this if we want like results। I know I could patiently obviously wait for like another 3 months and be on acne medication as my dermat suggested, and see and wait and ignore all the work and everything, but that was not at all possible। so my mom told me you can go with chemical peel if it is safe, and I asked my dermat कि कुछ problem, मैंने उनको 10 बार पूछा प्लीज कुछ problem नहीं होगी ना, because already मेरी skin बहुत ज़्यादा मुझे weak लग रही है, it's like damaged completely, I can feel it, and she told me no, nothing will happen, we will do the peel that is specifically for targeting the bacteria that you are facing right now, and all it will do is try to heal what active acne you have right now, and ये जो आपको pus and वो सब का प्रॉब्लम हो रहा है, it will help in drying it out, so that at least आपके scabs जब गिर जाएंगे आपकी skin थोड़ी normal हो जाएगी, you can start to feel your skin at least, that's what the peel will do। obviously मेरी situation जो थी तभी उन्होंने मुझे बोला था मुझे कम से कम 5 से 6 सेशंस तो लगेंगे मिनिमम, 4 to 6 तो बोलते ही है, but it also goes up to 8 sessions according to the severity of the acne, and मेरा काफी severe था तभी। so she told me let's go with first session and डिफरेंस देखते कितना होता है, एंड दिस वाज माय स्किन ड्यूरिंग द सेशन। मैंने वहाँ पे जस्ट फेस वॉश किया था, आप देख सकते हो देयर इज ब्लड एंड देयर स्कैब्स एंड एक्टिव एक्ने, इट वाज सो पेनफुल कि मुझे डर लग रहा था कि वो जब पील लगाएंगे तब मेरा क्या होएगा, बिकॉज द पील इज ऑब्वियसली इट बर्न्स व्हेन दे अप्लाई इट, ऑब्वियसली इट्स अ पीलिंग सोल्यूशन, तो वो उससे होगा ही। प्लस आई वाज नॉट रबिंग माय स्किन एट ऑल, मतलब आप जैसे फेस वॉश करते हो मैं वैसे फेस वॉश भी नहीं कर रही थी, मैं बहुत लाइटली फेस वॉश करती थी और उसको ऐसे ऐसे डैब करके निकालती थी, पानी से वॉश करती थी। सो आई वाज स्कैर्ड कि वो ऐसे 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 करेंगे एंड ऑल, सो आई टोल्ड हर टू डैब एंड अप्लाई द पील, एंड शी ऑब्वियसली डिड इट वेरी नाइसली, एंड सब हो गया। मैं पीलिंग सेशन का अलग से वीडियो बनाऊंगी, आई एम गोइंग टू यू नो गिव यू a detailed process of the peeling session, how it went for me, मैंने क्या क्या किया, मेरा routine क्या था after the session and everything, तो उस पे एक separate video obviously I'll post, but yes I went through the session and 1 month में I saw a great change in my skin, मेरे सारे active acne चले गए, just the scars took a little longer than expected because my doctor told me 7 days में निकल जाएंगे, फिर 10 days में, फिर 15 days, ऐसे करते करते 1 महीने हो गए, and I still have like 3 to 4 scars left on my right cheek, but my left and my forehead and my chin is completely clear। there is a few active acne, एक तो जो आते रहता है, but other than that my skin is completely clear। यहाँ पे तो एक भी active acne है नहीं फिलहाल, only the scabs are left to fall, and it's been almost 30 to 33, अभी आज मैं ये शूट कर रही हूँ तो 36-37 days हो गए। अभी सिर्फ ये scabs गिरेंगे तभी मेरी डर्मेट मुझे बता पाएगी if we need another chemical peel session or not, or what are the next steps that we need to take according to my skin's condition। and फिलहाल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, there's just skin and I feel so good because like normally मैं सो पा रही हूँ, मैं normally खा पा रही हूँ,
I'm able to smile क्योंकि मेरी स्माइल इतनी बड़ी है कि भाई एक्ने ने तो उसको बंद करके रख दिया था. It was terrible to say the least and horrifying था मेरे लिए वो पास करना ही वो months. You know since November till Jan basically chemical peel कराने के बाद भी my skin was वो scabs के अंदर से भी pus and blood निकलता था till it got actually completely healed. But finally I can see some ray of hope कि clear हो सकता है. Now forehead पे तो completely सिर्फ scars बचे हैं. यहाँ पे बहुत redness है अभी भी because of the inflammation and everything. My doctor told me वो redness खुद से चला जाएगा. Then you'll only have scars left. She even told me that it's good that I don't have any scarring like pits and pigmentation left by the acne or by the scabs. So she told me it's good कि वो heal होके completely निकल गया. So there's only scars which can be treated. आपको laser वेजर नहीं कराना पड़ेगा. That is what I'm happy about. रोलर कोस्टर था मेरे स्किन के लिए लास्ट ईयर. आई मीन इट मनहूस वर्ड दूंगी मैं 2024 को फॉर माई स्किन बिकॉज आई डोंट नो इफ इट वाज नजर या क्या. मेरी स्किन 2023 में वाज I was using these 2-3 products and वही मैंने कंटिन्यू किया था जैन तक. I don't know what went wrong. Maybe it's the weather in Mumbai. बहुत हीट भी बढ़ गया था anyways 2024 में अप्रैल में मार्च के टाइम पे मेरे सब डिसीजंस भी you know everything just happened all together. रिएक्शन पे रिएक्शन होते गया and things went wrong. You know sometimes like we take what we have for granted and हम जब वो चीज कुछ भी नहीं है लाइक दैट प्रॉब्लम इज इतनी सी एंड उस पर हम इतनी बड़ी बड़ी कंप्लेन करते हैं एज ए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है अंटिल वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए. सो जून जुलाई के टाइम एज आई टोल्ड यू व्हेन डॉक्टर कन्विंस्ड मी टू गो फॉर लेजर फॉर स्कार्स इंस्टेड ऑफ एक्ने तब मुझे ऐसा लग रहा था हाँ यार स्कार्स बहुत है ये ट्रीट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा. एंड नाउ माई फेस इज ओनली स्कार्स एंड लिटिल बिट ऑफ फेस इन दैट. सो यू नो आप मैंने ये चीज तो समझ लिया मेरी एक्सपीरियंस है दैट जो भी है आपका सिचुएशन डेफिनेटली पीपल हैव इट वर्स. समवन समवेयर आउट देयर हैज इट वर्स देन यू. आपका जो सिचुएशन है ऑब्वियसली बड़ा सिचुएशन अब हुआ तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो बट तब कुछ भी नहीं था. इट वाज वेरी मैनेजेबल. आई कुड पुट मेकअप एंड आई कुड जस्ट हाइड दोस स्कार्स बट आई कांट डू इट एनीमोर. मतलब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है इवन आफ्टर द स्कैब्स हैव फॉलन माई स्किन इज रियली सेंसिटिव टू टच एंड मतलब मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ उसका. तो मेकअप वेकअप सब गया यार. 2-3 महीने से मैंने मेकअप नहीं किया. I'm not able to shoot any content properly as I used to. I still, you know, mustered up some courage and मैंने फिर भी मेरा एक्ने का रील बना के डाला on my Instagram because I think it was high time I let my audience know why am I posting faceless content since 2 months and क्यों मैं इतनी active भी नहीं हूँ Instagram पे. So finally मैंने post किया about my acne. You can go and check it out. The video is also there on my shorts and oh my god it blew up on Instagram and so many people DM'd me. So many people are commenting on the video. तब मुझे पता चला यार I'm not alone in this. There are so many people out there, guys, girls, बहुत लोग हैं जिनका सिचुएशन मुझसे वर्स है या you know same है. And I'm so glad वीडियो एडिट करके 1 महीना हो चुका था लेकिन मैंने उसको पोस्ट अभी किया because I could not you know मैं खुद वो वीडियो नहीं देख पा रही थी कि ये कैसा था मेरा स्किन और कैसा हो गया. you know when you see yourself like that कि आपका स्किन इतना क्लियर था और अचानक से you know one day you are doing makeup, one day you have the smoothest and nice skin and the next day you wake up with texture and it just keeps getting worse and worse and worse and now you have a full face of acne, full face of scars, redness. It is not a nice feeling and मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं डालूं नहीं डालूं. I don't know what will people say, will they judge. I had a lot of overthinking going on. So जब मेरा chemical peel हुआ and after you know 20 days 30 days I saw like my skin was healing तब मुझे हुआ ठीक है what if I post my journey and you know people might relate to it या फिर कुछ लोगों को help हो जाएगी मेरी journey सुन के. Whatever helped me may help them. That was my initial thought of posting and I'm glad I posted it and I will continue to do so until my skin is completely clear. I will definitely share the whole journey and I really hope you guys can take some lessons away from this video because मुझे तो बहुत lessons मिल गए last year. I'm just going to take very good care of my skin. I'm not going to compromise it. I'm not going to take hasty decisions. Skin is so delicate कि आप एक wrong decision लो and it can lead to anything, freaking anything. अगर आपको कुछ एक्ने वैक्ने है तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन गूगल इन्फॉर्मेशन. खुद से उसका सोल्यूशन निकालने मत जाओ बिकॉज आई स्टिल गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स. यू नो पीपल आस्क मी कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, क्या वो लोग भी वो खरीद सकते हैं यूज कर सकते हैं. नो प्लीज डोंट डू दैट. डोंट आस्क पीपल ऑनलाइन और यू नो गूगल कि ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो कि नहीं, आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिम्टम्स हो रहे हैं, सो व्हाट इज इट. एंड आपको पता चलता है वो बैक्टीरियल एक्ने है, फंगल एक्ने है, ये, और फिर आप उसके प्रोडक्ट्स ढूंढ लेते हो एंड देन यू जस्ट गो एंड बाय इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट. नो प्लीज डोंट डू दैट. लेट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट स्टडी योर स्किन. लेट देम यू नो टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड गिव यू अ सोल्यूशन फॉर दैट. बिकॉज अगर आप खुद से करने जाओगे तो ऑब्वियसली मेरे जैसी हालत हो जाएगी आपकी. व्हेनेवर इट कम्स टू योर स्किन जस्ट मेक श्योर यू इन्वेस्ट. पहले इन्वेस्ट कर लो ताकि बाद में आपको बड़ा खर्चा ना हो या बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो. खर्चा
खर्चा तो दूर की बात है, बट द मेंटल ट्रॉमा इट हैज लेफ्ट मी विद, इवन नाउ दैट दिस साइड इज क्लियर, मैं फिर भी मॉइस्चराइजर इतना धीरे लगाती हूँ। जो डिप्रेशन में आप चले जाते हो, लाइक यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, यू डोंट फील लाइक शोइंग योर फेस टू एनीवन, मैं मास्क, मैं हैट, उसके ऊपर स्कार्फ पहन के मैं डर्मैट के पास जाती हूँ, सो दैट नोबडी कैन सी माई फेस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू फील दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, दिखा दो डर्मैट को। इफ यू हैव अ डर्मैट, इट्स रियली गुड, हु नोज योर स्किन, तो बहुत अच्छा है। इफ यू डोंट, जस्ट गो टू समवन, read their reviews and take a few suggestions from your friends or family and then go to that dermat. That is it. This was my story of my acne. I'm going to post a separate video on my chemical peel process and what I did post peel. क्या products मैं use कर रही थी, कैसे face को clean रख रही थी and all of that, because I was not allowed to wash my face. And yes, that is it. I think मैंने सब बोल दिया. You will get frequent updates on my Instagram, so don't forget to follow me there. Let's just hope if you are someone who's going through acne, आपका भी सेम सिचुएशन है, या यू हैव बीन थ्रू दिस और यू आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ, आई जस्ट होप यू अचीव दैट क्लियर स्किन दिस ईयर. मे आई अचीव दैट क्लियर स्किन टू. आई एम मैनिफेस्टिंग दिस फॉर मी एंड यू. सो इफ यू वाचिंग दिस एंड अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो एक्ने से, जस्ट डोंट वरी. आई नो फॉर श्योर ये एक फेज है एंड इट विल क्लियर आउट सून. यू विल गो थ्रू दिस. प्रॉब्लम्स होगी, सैडनेस होगी, बट you will come out of it stronger and you will love your skin even more. If you made it till the end of this video, if you watched the whole video, don't forget to comment this emoji and let's spread love and positivity in the comments and in our lives too. So yep, manifesting clear and healthy glass skin for you this year. Let 2025 be a good year. So thank you for watching. I will see you soon in my next videos. Bye.